This conference will now be recorded. يا مزهر العجائب 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 يا مزهر العجائب
या मज़हरल अजायब, 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 या मज़हरल अजायब। शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। या अली मदद सर। या अली मदद, या अली मदद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या मज़हरल अजाहिब, सुभान अल्लाह, the manifestation of all the miracle. What a beautiful, beautiful tasbih to be recited early in the morning. This gives us so much love, hope, faith that our Mullah, our Ali Zaman, is the true manifestation of all the miracles. All the miracles could happen, but we do not see Mullah do physical miracles, but spiritual and intellectual miracles are happening every day. So Imam is the one who does all the batini, spiritual and ilmi, intellectual miracles. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम साथियों को या अली मदद। May Mullah be, Ameen, Ameen. May Mullah be with all of you. Ameen. With Hazrat Imam's पाक नेम हम इस सेशन का आगाज करते हैं। नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजिर इमाम, हाजिर इमाम। या मौलाए मेहरबान, या मौलाए जमान, या अली अल्लाह अल हय्युल कय्यूम, अली अल्लाह मदद फरमा। या मौला तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी मौला, तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी मौला। या मौला हम गरीबों पर रहम फरमाना, हमारी मदद करना मौला। या मौला हर हमेशा हमारे साथ रहना। या मौला अपना मुबारक हाथ हम गरीबों पर रखना ताकि हम तेरे इल्मी काम को कर सके मौला। शुक्रिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। Today we will start with Farman number 34 from Kalam-e Imam Mubin. This Farman is a repetition of a lesson. ये फरमान जो है एक पुराने लेसन का रिपीटेशन है, दर्स मुकर्रर, a continue lesson है। As we have learned in our previous sessions through the Faramin, that there are two kind of shaitan. Devil are of two kinds. एक जो है वो इंसानी सूरत में है, एक जो है वो जिन्नी सूरत में है। One is apparent in the form of human, outside, in front of you, around you, close to you. Second is within you.
we must remember that the evil or the shaitan within you does not get activated. जो शैतान आपके अंदर है वो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता until कोई इंसी शैतान आपके ऊपर वसवसे का पथराव ना करे। आपने एक अल्फाज को सुना होगा, शैताने रजीम। आपने ये अल्फाज सुना होगा, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। दिस वर्ड रजीम, पथराव करने वाला शैतान। या खुदा हमें बचा उस शैतान से जो पथराव करता है। ओ अल्लाह, save us from that shaitan which throw pebbles, rocks at us. But we have never seen this shaitan, have we? We have never seen a shaitan throwing rocks at us. But this is exactly the dua we are asking to keep us safe away from the shaitan regime, shaitan which throw pebbles at you. What does it mean? The pebble is the example of whispering. ये जो whisper करता है ना, वो हमारे दिलों पर एक पथराव, एक गुनाहों की, एक ख्यालात की, एक दुश्मनी की आग लगाता है। इसको कुरान की हिकमत में, हिकमती लैंग्वेज के अंदर पथराव कहा गया। विस्परिंग करता है और ये विस्पर से हमारे दिल को डिस्ट्रॉय कर देता है। The whisper, but who whispers? Where do we hear this whisper? From people around us. We have learned this lesson, but this lesson is so important because we forget. We forget. And sometimes it is good, it is okay to be reminded. Because if we are not aware who and where the shaitan is, we will not be able to protect ourselves. You know, in English, we say, if we don't know where the pit holes are, then we will fall into it. अगर हमें पता नहीं है कि आगे गड़ा है, खड्डा है, हम गिर जाएंगे। हमें उससे होशियार रहना चाहिए। इसी तरह से अगर हमें पता है कि कौन है जो हम पर पथराव करता है, हम पर विश्वासे की बारिश करता है, हमारे दिल को खराब करता है, हमारे ख्यालात को खराब करता है, if we know who is messing with our heart and messing with our head, if we know, then we know who our enemy is. It may be, they may be in the form of friend, family, someone close to you, someone at your work, someone within your Jamaat. It could be anyone. It could be a news media who's messing with your head. So let's read this Farman and see how Imam is telling us to protect ourselves. How do we protect ourselves? क्या फरमाते हैं इमाम, किस तरह से हम अपने आप को इन चीजों से दूर कर सके और बचाव कर सके। अज़ीज़ इमाम आका सल्लल्लाहु मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस जमाने में शैतान का गलबा सख्त है। तुम शैतान से बहुत डर कर चलना और बहुत संभल कर चलना। In this very first line, what we just explained answers.
how can you be aware of him? How would you stay away from him if you do not understand him? If you don't know who he is? आदमी समझता है कि ये आदमी है, लेकिन इंसान जात का दुश्मन. We think those are our friends, those are human, those are our relatives, those are someone we know, but Mullah say they are your enemy. Not your enemy, they are the enemy of mankind. Enemy of mankind, वो इंसान का दुश्मन है. शैतान मौलून है, वो मोमिन का दुश्मन है. Amazing part is the shaitan attacks those harder who are the true followers of Imam. I think यहीं पर हमारी जो मिस्टेक होती है कि नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमसे गुनाह नहीं होता है, हम तो तस्बीह करते हैं, हम तो जमात से जाते हैं, हम पर शैतान का अटैक नहीं हो सकता है. Think about it. The promise that shaitan made at the beginning, if you remember that, what was the promise shaitan made at the beginning, at the event of Adam? He said, I will sit on Sirat al-Mustaqim and I will attack your mu'mineen. Remember that? क्या कहा था शैतान ने? कि मैं तेरे रास्ते पर बैठूंगा या अल्लाह, और तेरे मानने वालों को, तेरे मुमिनीन को मैं वर्गलाऊंगा. If you remember that, those who are not on Sirat al-Mustaqim, शैतान already got them. वो तो शैतान के साथ ही है, उसके ऊपर अटैक करने की जरूरत नहीं है. अटैक किसके ऊपर होता है? जो अपोजिट साइड में होता है. मुल्ला फरमाते हैं, और इस बात से, इस कुरानिक आयत से हमें याद आया कि शैतान ने वादा किया था कि मैं सिरातल मुस्तकीम पर बैठूंगा, सीधे रास्ते पर, तेरे खुदा के रास्ते पर बैठूंगा. And I will attack those who are on your way, on your path. शैतान मोमिनों का दुश्मन है. क्यों? कि उसको मोमिन अच्छे नहीं लगते हैं. Who is Imam talking about? Imam is talking about you and me. He already got all the others. He's looking for you. He's looking for me. Only enemies he has left are you and me. And he is our enemy. And why is he our enemy? Why does he not like us? क्योंकि हम सिरात अल मुस्तकीम पर चल रहे हैं, इसलिए वो हमको पसंद नहीं करता है, और वो हम पर पथराव करता है, वो हम पर वसवसे की बारिश करता है. किस तरह से करता है? Now here, mostly we get in a trap because we do not understand. Unknowingly, we get into the trap of devil. Not knowingly. Knowingly हम क्यों गुनाह करेंगे? जानबूझ कर तो हम गुनाह नहीं करेंगे ना. हम unknowingly ये गुनाह करते हैं. हम शैतान के वसवसों के अंदर आ जाते हैं. क्यों? कि हमें ये बात समझ नहीं आती है, और जब हम समझ भी जाते हैं तो हम उससे निकल नहीं पाते हैं. और यही हमको सीखना है. हमको हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, इमाम की मदद मांगे. तौफीक ताईद, मौला मौला तौफीक ताईद, give us that strength, inspire us from inside, give us the courage so we can fight against the shaitan. That is exactly what we are asking
That is the prayer from the Imam every day, every minute, because this trap is a heart trap. चले आगे चलते हैं। मौला बोलते हैं तुम उसको अपने दिल में जगह मत देना, शैतान की बातें मत सुनना, शैतान की बातें मत सुनना। शैतान कई गलबा ना कर दे उसकी फिक्र करना। Do not be careful. Do not let him in your heart. Don't listen to him. Don't talk to him. Don't come into his deception. उसके गलबे में नहीं आना। अपने दिल को किला बंद करना। Watch your heart. Make sure he does not come into your heart, because he will come as a fly and then he will become an elephant and he will consume your heart completely. He will come as a whisper from your ear and will consume your mind. I wanted to give you an example of this. This is such a beautiful example. A man, a neighbor, or two neighbors, they are both coming out of their apartment. And this example will tell you how insi and shaitani, human shaitan works together. How do they work together? So two friends or two neighbors coming out of the apartment. One neighbor sees the other neighbor. He gets into his car and rushes away. And this neighbor is thinking, what happened to this man? Every day when I come out, he says, Yali Madad. You know, he always asks me how I'm doing. I always say Yali Madad back to him. I always ask him how he's doing. But I don't know what happened to him today. He just came out without any Yali Madad, without anything. He sits in his car and he rushes away. Now let's see how Shaitan works. I wanted to give an example so you understand how Shaitan works exactly. And see how powerful this Shaitan is. How does he consumes you, consumes your heart and mind. He says, what is wrong with him? What happened to him? And his mind goes. And he remembers some whisper that had come into his ear. उसके कानों में जो बातें आई थी ना, वो उसको याद आ रही है। उसको याद आ रही है कि उसकी बीवी ने, उसके बेटे ने, उसकी माँ ने, उसके दोस्त ने कहा था कि ये अपना जो कासम भाई है ना बाजू में, उसने नई गाड़ी ली है तो बड़ा गुरूर करता है. Someone had put a whisper in his ear that our neighbor Kasim bhai, because he had bought a new car, now he's so proud. He don't say Yali Madad. He always driving fast. You know, he think it's something now because he bought a new car. Remember that whisper? Because he let that whisper come in his heart. He left his door open. He left his door open. And now this shaitan is working from inside. कि वो बहुत गुरूर करता है, उसको याद आता है. Now the shaitan is rolling the snow. Snow को पता है कैसा रोल होता है? इतना छोटा पेबल होता है. If you roll it, it will become a rock. And he thinks, इसकी बीवी भी जो है, मेरी बीवी से बहुत ही झगड़ा करती है. इसके बच्चे भी मेरे बच्चे को बहुत नापसंद करते हैं. इसका भाई है ना, वो भी मेरे भाई से झगड़ा करता है. इसकी माँ भी मेरी माँ से झगड़ा करती थी. Look at where it's going now. Look at how Shaitan is working inside him. That, oh, I remember, not only him, his wife
He always fight with my wife. The children, they do not like my children. His brother always bothering my brother. Oh yeah, also remember, his mother and his daddy and his nani from way back, they always had a tussle with my nani and my daddy. Now look at how far he's going back. All day long, while he's at work, while he's doing his thing, he remembers that. And his heart is telling him, my God, this Kasamba is no good. You know, and he always doing bad thing to me. He always doing bad thing to me. And by the time he comes home, he's completely consumed by this whispers, by this thought. जब तक वो घर पे आता है, तब तक तो उसका पूरा दिल जल गया होता है, उसका सत्यानाश हो गया होता है. Totally consumed by this whisper. Now, think about it. Wasn't there another way? क्या एक और रास्ता था कि नहीं था? एक मोमिन शख्स क्या करता है? अब let's take the same example. एक मोमिन शख्स क्या बोलता है? वापस वही दो नेबर बाहर आते हैं, कासम भाई गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं. करीम भाई जो इधर खड़े हुए हैं, अब वो शैतान को नहीं सुनता है, उसने विस्पर को नहीं अपने अंदर आने दिया. वो क्या बोलेगा? अरे बेचारा कासम भाई पता नहीं किस फिक्र में है, कितना जल्दी में जा रहा है. आई होप कि इसको कोई इमरजेंसी नहीं हो घर में. आई होप ही ड्राइव सेफली. या मौला तो उसके साथ रहना, बेचारा बहुत जल्दी में जा रहा है, कहीं गाड़ी इधर उधर ना हो जाए. यू सी another way of thinking. What happened? You know what happened? He did not let the whisper come into his ear. His heart was pure. उसने वो नहीं सुना था जो पहले इवेंट के अंदर था. उसने अपने दिल के अंदर शैतान को दाखिल नहीं किया था. तो उसने क्या किया? फौरन से उसके लिए दुआ की कि बेचारा बताने कौन सी जल्दी में जा रहा होगा, मौला उसके उस पर रहम कर, उसके साथ रहे. हो सकता है घर में कोई इमरजेंसी हो सकता है दुकान में कोई इमरजेंसी हो, पता नहीं क्या जल्दी में जा रहा था बेचारा. Do you see that? Now all day long इसके दिल में अपने उस नेबर के लिए अच्छे थॉट्स हैं कि अच्छा मैं जब घर पे जाऊंगा तो चेक करूंगा कि कासम भाई ठीक है कि नहीं है. You know, he's worried about his neighbor now, his friend. He has a good prayers all day long for him. किसका फायदा हुआ मेरे को बताएं आप? क्योंकि just because उसने अपने कानों के अंदर वो बातें नहीं आने दी थी, अब उसका पूरा दिन इमाम की याद में और अपने नेबर के लिए दुआ करने में गुजरा. You see two different sides of it. आपने देखा कितना आसान है कि एक मोमिन अपने कान को बंद रखे एंड बी पॉजिटिव. हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचे, और यही शैतान से दूरी है. क्योंकि शैतान क्या करता है कि हमारे दिलों में दूसरों के लिए बुरे अल्फाज और बुरे ख्याल लाता है. एंड एट द एंड ऑफ द डे यू लूज. नुकसान किसका हुआ? आपका. लेकिन अगर आपने अपने अंदर अपने कानों को बंद रखा तो फायदा किसका हुआ? आपका. That is exactly what Imam saying. Keep your heart closed like a fortress. Do not let your enemy, Shaitan, whisper into your heart. आगे मौला हिदायत करते हैं कि तुम जमात इखलास से चलना. That is the punchline. आप जमात इखलास से चलना. इखलास अच्छाई, यूनिटी, खैर खाई, good thoughts, well wish. You see that?
Imam is giving us an easy key to apply. Because if you are well-wisher for your neighbor, for your friend, you will never listen anything bad about him or her. आप कैसे सुनेंगे उसकी बुराई? क्योंकि आपका दिल उसके लिए अच्छा है, खैर खाई में है। आप कभी भी उसकी बात नहीं सुनेंगे। आप बोलेंगे नहीं, मेरे को इसकी बात नहीं सुननी है। आप अपने आप को सेव करेंगे, डिफेंड करेंगे, अपने दिल को बंद रखेंगे बुराइयों से। मौला फरमाते हैं तुम इखलास से चलना, हमेशा जमात खाने में आना, जमात करना नहीं छोड़ना। यानी कि one of the other way of defending yourself is to stay regular in your prayers and in your remembrance. Do not let it go. आगे मौला फरमाते हैं मुखी कामड़िया. Now responsibility Imam puts on मुखी कामड़िया, on the elders of our Jamaat, including of course ALWAAZ and those who has ilm. The responsibility is on them, because if you have the ilm, if you have the knowledge, you must share. But this responsibility is also on Mukhi Kamriya and ALWAAZ. So let's see what Mullah says. Mukhi Kamriya गिनानों का मुशाहिदा करके जमात को सुनाए और जमात को हमेशा तालीम दे। जमात में जो बड़े हैं उनको ध्यान रखकर जमात को गिनानों के मायने करें. You know, I love this part. Not only Mukhi Kamriya, not only ALWAAZ, you know, we have such a beautiful tradition of Ginan in our Jamaat. Those who recite Ginan, I'm happy that they have a good voice and they can recite the Ginan in a very good way. It would be better if they also knew the meaning of it and they will give their knowledge to others. Because poor person like me, I don't know the meaning of Ginan. I'm just so poor. It would be nice, those who know the Ginan, those who recite the Ginan in such a good rhythm and voice, they melts our heart. Wouldn't it be nice if they also will give us the knowledge of it, the understanding of it? That would be great, right? This is Imam's Farman. And look at the last word Imam says in this Farman. Taaleem deni chahiye. Ilm dena chahiye. You must teach. You must teach. So responsibility are on Mukhi Kamriya, elders, those who are reciting Ginans and Farman, and those who have the knowledge. We must do our duty according to Imam's Farman. And Hazir Imam in his present Jama, how many times he has emphasized on ilm? If we don't understand, then there is a chance that we will get in a trap. Let's come to Farman number 35. Farman number 35, Hazrat Imam Aka Sultan Muhammad Shah Salawatullah Alayhi says, मुखी कामड़ियों को जमात को बहुत संभाल रखनी चाहिए. मुखी कामड़ियों को जमात की बहुत संभाल रखनी चाहिए. हमेशा जमात में आना और गिनान का मुशाहिदा करके सबको हकीकी मजहब की समझ देना और जिनको दीन के रास्ते की खबर नहीं उनको दीन के रास्ते पर लाना. Very, very clear Farman, a task for Mukhi Kamriya, a task for elders, a task for Tariqa board, a task for ALWAAZ, and a task for the elders of the Jamaat.
Very clear, Farman. Because if they do not do their job correctly and 100% fulfill this task, अगर मुखी कामड़िया खुद नहीं समझेंगे मतलब को तो हमको कैसा समझाएंगे? अगर हमारे अलवाइज और हमारे एल्डर्स खुद नहीं समझेंगे तरीके को तो हमको कैसे समझाएंगे? Very important task, and it is a responsibility. जमात को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इमाम ने हमारे एल्डर्स, हमारे अमलदार, हमारे मुखी कामड़े पर रखी हुई है कि वो खुद समझे और हमको भी समझाए। मौला आगे फरमाते हैं और दीन के रास्ते, आई एम सॉरी, उनको दीन के रास्ते पर लाना। नाउ एग्जांपल, एक भाई ने मौला से अर्ज की, खुदावंद मेरे दिल में बहुत वसवसे पैदा होते हैं। तब मौला ने फरमाया तुम्हें क्या होता है? उसने कहा मेरे दिल में याद नहीं रहती और गिनान से मोहब्बत नहीं होती, दिल में अंधेरा पैदा होता है। First, let's understand the problem. Let's understand the problem, and then we will look at how Imam answered them. This is the great way to learn how to safeguard our heart. ये बहुत अच्छा तरीका है कि सवाल जवाब के जरिए से हम अपने आप को सेफ गार्ड करें। क्योंकि उस जमाने में हम डायरेक्टली इमाम से पूछ सकते थे, लेकिन आज भी हम इमाम से पूछ सकते हैं इनडायरेक्टली। एक शख्स मौला के पास आता है और देखिए उसके सवाल का जवाब उसके सवाल में ही है कि मेरे दिल में वसवसे पैदा होते हैं। रिमेंबर वसवसे, whispers. In my heart, whisper had taken place, and therefore I cannot do the remembrance. Look at this. What does whisper do? It takes your mind away from the Imam's remembrance. वसवसे आपको इमाम की याद से दूर ले जाते हैं, वो आपको कंज्यूम कर लेते हैं, आपके दिल को मुकम्मल तौर पर पकड़ लेते हैं, आपको इमाम की याद नहीं आने देते हैं, इमाम की याद से आपको दूर ले जाते हैं। Do you see the question? And therefore, those who have whisper in their heart, whose heart has been consumed by whisper, by waswasa, by bad thoughts, even if they think they are doing tasbih, they will not be able to do too much because the whisper will take over. When they will go for Jamaat Kana, within the dua, those whisper will take over. When they are listening to Ginan, those whisper will take over. आप जमात करने जाएंगे भी, तस्बीह भी करेंगे, तो भी वो बुरे ख्यालात आपके सामने आएंगे और आपको इमाम की याद से दूर ले जाएंगे। Let's see how Mullah answered this. इमाम ने जवाब दिया, एक एडवाइस की। नंबर 1 मौला फरमाते हैं झूठ नहीं बोलना। I wanted to explain झूठ नहीं बोलना। You know, if you ask anyone amongst yourself, ask yourself, क्या मैं झूठ बोलता हूँ? Your answer instantly will be no. Am I correct in my assumption? If you ask yourself or you ask anyone around you, do you lie? They will say nope. Instantly. झूठ बहुत किस्म के हैं. There are lies that you tell others, and then there is lie that you tell yourself. How do we lie to ourselves? The number 1 lie is कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ. You see that? How do you lie to yourself? The first lie to yourself is that I do not lie. That is number 1 lie. Imam Mustarsibillah Salawatullah alayhi in Pir Pindiyat Jama Marzi says, what is the greatest lie
What is the greatest lie? That knowing the Imam's position and then not declaring it. Very hard subject, hard lesson to learn. Knowing Imam's position, यानी कि इमाम को जानना और फिर उसको ना कहना, ये सबसे बड़ा झूठ है. Sometime I remember someone asked, "Sir, why do you say Ali Allah?" Because I don't want it to lie. Knowing Imam's position and not saying is the greatest lie of all. If you understand Imam, if you know what Imam is, if you know the Nur in the Imam, if you understand Imam, then don't be shy. And Imam, I'm not saying it, read in Pir Pindyat Jama Mardi. This book, Pir Pindyat Jama Mardi, look at the name. Imam Musa Sibla has given to the Jamaat as a Pir. And what does Pir say? Pir Puchine Chalwano. You're supposed to follow the Pir, right? And Imam in this book says the biggest lie is to know the Imam and then do not declare him in true manner is the highest, greatest lie of all. यहाँ से झूठ की बुनियाद पड़ती है. फिर हमको पता है कि कोई आदमी किसी और आदमी की बुराई कर रहा है and you don't say anything. कोई आपके पास आकर किसी की बुराई करता है और आप जानते हैं कि वो आदमी अच्छा है और आप उसको कुछ भी नहीं बोलते हैं. आप बोलेंगे I didn't say anything, but you indulge, you got yourself involved in the lie. You are part of the lie now. आपको पता है ना कि एक आदमी जो किसी को कत्ल करता है और एक आदमी जो उसको कत्ल करने में मदद करता है, दोनों ही गुनहगार हैं. एक आदमी जो दूसरे आदमी की बुराई करता है और एक आदमी जो उसके साथ बैठकर उसकी बुराई को सुनता है, वो दोनों ही उस झूठ के अंदर शामिल है, इंक्लूड है, बराबर बराबर के गुने के हकदार हैं, जिम्मेदार हैं. We understand this, right? You cannot say, well, I did not lie, he lied. But if you know he was lying and you sat there and you were listening to him saying bad thing about your brother and sister, your friend, of course he was telling you about someone you knew, and you tolerate that, you indulge in that, you gave him company, you accepted his lie, you are part of that. You are part of that. So मुला फरमाते हैं झूठ नहीं बोलना. We need to understand this lesson. That the reason we are here for this 1 hour is to understand all this nitty-gritty of our belief. हमारी मजहब की जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, उसी को तो हमको सीखना है. So मुला says don't lie, झूठ नहीं बोलना, पराये माल में तमा नहीं करना, don't desire other things, don't keep knowledge, greed for others, पराये औरत के सामने खराब नजरों से नहीं देखना, keep your eyes pure, हलाल कमाई हुई रोजी में से हक अदा करना. This was our previous week's question. Make sure your earning is pure and then you give the zakat out of that earning to make that earning absolute pure. किसी से हसद नहीं करना. Don't be jealous and do not slander others. Very important. Hasad, jealousy. Jealousy की वजह से हम slander करते हैं, right? जब हम किसी से jealous हो जाते हैं तो उसके बारे में बुरी बातें करते हैं. Don't be jealous of others and do not slander others. One time, a man came to Huzur sallallahu alaihi wasallam and said, Ya Mullah, I know someone
who's speaking bad about you, may I tell you who that person is? Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam said, stop. And he said, if what you are about to tell me is true, then that is gossiping. And if it's not true, then that is slander. Regardless of the first or the second, I do not want to get involved in this sin. Do not make me, do not make me sinful with you. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बोलते हैं ठहरो, अभी जो आप मेरे को बात बताने वाले हो, अगर वो दुरुस्त है तो वो तो गिला गिबत हो गई, और अगर वो गलत है तो वो तोहमत हो गई, और ये दोनों ही गुनाह है। मुझे अपने साथ इस गुनाह के अंदर शामिल ना करो। I don't want to be involved in your sin. That's how we reply. That's how we safeguard our heart and our mind. मौला फरमाते किसी ने हसद नहीं रखना, नौकरानी से निकाह करके घर में नहीं रखना. This is again, I don't know if this thing is happening today, but it was a way that our Ismaili in some countries got involved, and they would have second wife, their mate, as their wife. And then above Farman, I believe in Farman number 32, Mullah spoke about that, and we had talked about that. They do not keep a second goli or second servant as your wife. That is not good. अगर इस मुताबिक अमल करोगे तो तुम्हारे दिल में रोशनी होगी और ईमान मोहब्बत में इजाफा होगा, खाना वजान. Look at the keys Imam has given us, the 6 keys. इमाम के ऊपर पूरा ईमान रखना, इमाम की हकीकत को समझकर बयान करना, दूसरे के माल से दूर रहना, अपनी आइज को प्योर रखना, अपने कमाई को प्योर रखना, दसों देना, किसी की गिला गिबत और ना करना, किसी से हसद ना करना, और आखिर में पराई औरत से दूर रहना. That is the फरमान. The final word. If we keep our heart in the remembrance of the Imam, as per Imam's wish, as per Imam's Farman. What is Imam's Farman? Even if you have a 5 seconds, if you have a 10 seconds, if you have a minute, take your tasbih, call upon Allah, call upon Muhammad, call upon Ali, take the names of the Imams. If you are busy with tasbih, फजूल बातों से दूर रहना. Do not involve yourself in gossiping. जब हम उल्टी सीधी दूसरों से बातें करते हैं ना, तभी तो हमारे गुनाहों के अंदर इजाफा होता है. But if we are keeping ourselves busy with the remembrance of the Imam as per Imam's Farman, that is the best way to stay away from the sin, from the gossiping. That is our enemy. That is our biggest enemy. फजूल की बातें करना. हमेशा एक जगह पर कहीं पर नाचीज पढ़ रहा था, आरिफ कामिल ज़मान फरमाते हैं कि इंसान 2 किस्म के हैं. Just think about this. इंसान 2 किस्म के हैं. एक वो जो अपने दिल और दिमाग को हमेशा इमाम की तरफ रखते हैं, एक वो जो इमाम के तरफ से दूर रखते हैं. On daily basis, we are both of them. On daily basis हम ये दोनों हैं. एक जो अपना ध्यान को इमाम की तरफ रखते हैं, एक वो जो इमाम की ध्यान से दूर रखते हैं. Every day हम ये दोनों हैं. We must see कि which one is greater. Do we keep our mind and focus on Imam,
or do we keep our mind and focus away from the Imam? Which one are we? We are both on daily basis. But are we focused more on the right side or are we focused more on the left side? हमारा ध्यान सारा दिन दूसरी जगह है या हमारा ध्यान सारा दिन इमाम की तरफ है? That is a question for ourselves. You don't have to tell me, you don't have to tell anyone. That is a question we must ask ourselves. Which one are we? This is the note from Arif Kamil. And he said, think who you are. Because remember, self-reflection is the key to safeguard ourselves. वो शख्स जो अपने आप को नहीं देखता, वो हमेशा दूसरों पर नजर रखता है, वो कभी भी अपने आप को ठीक नहीं कर सकता है. Don't worry about others. पांची कर तो सांची थी है. Think of yourself and your soul, because when you die, the day you meet your Mola, he will not ask you about your family, your friends, your children, your parents. He will only ask you about you. And you will be answerable for your deeds. जिस दिन हम जाएंगे ना मोला के पास, मोला हमको नहीं पूछने वाला है कि तूने तेरी फैमिली के क्या हाल है, तेरे बच्चे के लिए तूने अपनी रूह के लिए क्या किया. That would be the question. One single question. What did you do for yourself? So let me stop here. This was a great lessons that we have learned today. Hopefully, inshallah, if you have any comments or question, please send to Kamre Sahib. Yali Madad Kamre Sahib. Malani Madad, sir. Friends, if you have any question, please share in the chat room, or you can ask later. So there's one question I'm trying to understand. So see if you can understand. What if your relation is off, loading, knowing that person is home all day? I don't understand the question. Okay. I requested friend to just clarify this question, so I'm still waiting for the response. So I don't see any question at this time in the chat room. So friends, if you have any question, please unmute your device. Nabat, to answer your question, which book of Arif Kamil that you gave reference? There was not reference, this was something that I remember reading in one of the book. And I just remember in the back of my mind that this is a lesson that I had learned a while back, that there are two kinds of human, mu'minin, and I remember that, so that's what I was saying. I do not remember exactly which book I had read in, but it was such a beautiful lesson that I could not forget. G. या अली मदद. या अली मदद. अजीज भाई, आज आप जो समझाए ना, तो उसमें एक ये फरमान है कि आपको सूखा रास्ता आप ढूंढो, जिससे कि आप सातवें आसमान पे पहुंचेंगे और आपको सूखी जमीन मिलेंगी. तो इसमें वो वसवसे वाला ही पहले आता है कि हजारों जात के शैतान आपके ऊपर बारिश करता है. तो ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि सूखा रास्ता ढूंढो और सातवें आसमान पे पहुंचेंगे तो आपको सूखी जमीन मिलेंगी. Okay. So let me repeat this question in English. My friend is asking, in one of the Imam's Farman, Imam says, find the dry land so you may walk on that and get to that final destination where you will be able to rest. यहाँ पर ये है, when Imam is giving an example, we must come to a conclusion what it means. It means
इसका मतलब होता है कि आसान रास्ता ढूंढे, आप सीधा रास्ता ढूंढे, यानी कि हमेशा सीधे रास्ते पे चलना, तो आप उस रास्ते से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। और वो डेस्टिनेशन क्या है? तो हमारे पास दो सवाल हो गए कि ये रास्ता कौन सा है और वो मकान कौन सा है। कुरान के अंदर, और इंशाल्लाह टुमारो मॉर्निंग एक्चुअली हमारे कल के सब्जेक्ट में हम इसको कवर करने वाले हैं कि सिरातुल मुस्तकीम क्या है, सीधा रास्ता क्या है। Remember, the words that Imam used in the Farman are the example. Understanding the tawil of it is for us. ठीक है? सिरातुल मुस्तकीम वो रास्ता है जो सीधा और आसान हमको इमाम अपने असल तक ले जाए। और डेस्टिनेशन क्या है? इमाम और इमाम में फना होना। तो इस फरमान का आराम से सीधा मतलब क्या हुआ, इजी मतलब क्या हुआ? That walk on Sirat al-Mustaqim, on straight path, easy path, so you may get to the destination easily. इसका ये मतलब होता है जी। थैंक यू शुक्र मौलाना। You're welcome. Aziz ba, जी Aziz ba, जी મોરા કે છે સુલતાન મોહમ્મદ શાહ કે છે કે મોટો ગુનો એ છે કે ખુદાને ભૂલવું એ મોટો ગુનો છે of all the gunos. So explain this one to what this we are talking about, you know, કે આ બધા વિચાર આવે છે. yeah. So like we just talked about that if we are not in the remembrance of the Imam, that is a part of our other things that we are doing, which is keeping us away from the Imam. So the two kind of mu'minin, one who stays in the remembrance of the Imam and one who are away from the Imam. So the time that we use and not remembering the Imam, then what are we doing? We are wasting the precious time that Imam has trusted us with. Imam ने जो हमको वक्त दिया था, बहुत ही कीमती जिंदगी दी थी, वो उसका टास्क क्या था उस जिंदगी का? What was the purpose? To find our way back to him, to find the hidden treasure. That was the task. So जब हम वो task को नहीं कर रहे हैं, so what are we doing? We are away from his remembrance, and therefore we are wasting his precious time that he has given us. So Imam is drawing our attention, do not waste and do not lose the path. Don't forget your reason for being here. I know sometimes people argue and they even give me the Imam's Farman of keeping the balance of life. Only if you could understand. You know, one thing you will never hear me talk about, never. I will never tell you I'm keeping the balance of life. I will never tell you that. Because I do not want it to mock. मैं इमाम की मस्ती नहीं करना चाहता हूँ. When you're saying I'm keeping the balance of life according to Imam's Farman, you are actually mocking the Imam. You are mocking the Imam. Please don't do that. हम बैलेंस कर ही नहीं सकते हैं, कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी कोशिश कर ले हम नहीं कर सकते हैं. आप देखिए, मैं इसको एग्जांपल देता हूं. आपके 24 घंटे हैं कि आप 12 घंटे इमाम की याद में रहते हैं? आपका जवाब होगा कि नहीं. You see that? Do not talk about the balance of life because you cannot keep the balance of life. I cannot keep the balance of life. It is almost, I'm not saying it's impossible. I'm not saying it's impossible. Almost impossible. So it is better to be humble. Be humble.
say, Ya Mola, I cannot keep the balance of life. Then let Mola help you keep the balance of life. But don't mark Imam by saying, I'm keeping the balance of life. Because we can't. So आपके सवाल का जो जवाब था is that we must try. See, the key word is we must try to stay in the remembrance of Allah so we do not get involved in other sins. ये है फरमान. Thank you for asking. Good question. Yes, Hamida has made a good comment. All these which are not according to the Farman are bad deed. Ji. Sir, we have one question. So why Allah doesn't stop Satan from misleading Mu'min? Very good question. Very good question. The principle of creation. पहले सवाल को देख ले आप कि भाई अगर ऐसी बात है तो खुदा तो कुछ भी कर सकता है तो वो शैतान को रोक लेता ताकि वो हमको वसवसे ना देता, राइट? लेकिन रिमेंबर द प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन. क्या है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन? खुदा ने हर चीज को जुफ्त पैदा किया है. God, in God creations, everything are two and two, good and bad. Adam and devil, Adam and Iblis, man and woman, day and night. Everything are in two. And therefore, there is a care and shar, the good and the bad. If there was no shar, if there was no shaitan, what our life would be? So boring. Our life would be so boring. We would have nothing to do because there would be no shaitan to divert us away from the Allah. Where would the task would be? What our job would be? Why would we even come to this world? We would have nothing to do. Life would be so boring. Right now, our life is a challenge. Our life is a challenge. And that is good. Now we have something to do. In one place, we want to find thee. In another place, we are fighting the shaitan. खेर को पकड़ना है, शर को छोड़ना है. और यही तो मजा है, यही तो पूरा life का purpose है. I mean, look at it. As soon Allah made Adam, the very same day, He created the shaitan. Otherwise, He would have. How did even Iblis say no to Him? Did Iblis have more power than Allah? No, he did not. Think about that. यही तो हमारी अक्ल हमको बताती है कि जिस दिन आदम को बनाया उसी दिन खुदा ने इब्लीस को भी सामने खड़ा कर दिया. हर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर इंसान के साथ उसका एक फरिश्ता और एक शैतान है. टू, एक फरिश्ता भी है, एक शैतान भी है. Everything in creation are in two. It is all from Allah Himself. What a question. Thank you. Good question. Ji. So some friends asking, so there is a duality here in this world. Is there any duality in spiritual world? Wow. Another great question. No, it's not. How? How is it not? In this life, in this body, you know what we have? We have a free will. Free will, we can choose one or the other. We can choose good or bad. Free will. Once you die, you don't have a free will. If you don't have a free will, the question is no.
there is no duality, because from there on, the journey of the soul is only upward, only upward. In this world, we have a choice to be like an angel or like animal. ऊपर जाना है, नीचे जाना है, our choice, free will. वहां पर नहीं है, वहां पर सिर्फ ऊपर जाना है. जी, great question. Right, I don't see any questions. Any friends have any questions? Please unmute your device. If there are no questions, we can definitely stop here. याली मदद या अली मदद. मुझे तो बहुत खुशी होती है. पहला तो मैं बोलूंगा आपका चेहरा देख के मुझे बहुत खुशी होती है. इतना चेहरा आपका नूरानी चेहरा है और आपको मैं मुबारक है. आज मुझे ज्यादा दिख रहा है आपके नूरानी चेहरा, चमक ज्यादा दिख रही है आपके चेहरे पे. और दूसरी बात मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इमाम का फरमान है कि जेना दिल में घिना ने दुआ છે તેનાથી શૈતાન ભાગી જાય છે. और दूसरा सवाल ये है कि मोहम्मद ना कदमे कदमे मोजीजा हुई है, तो प्लीज उसके बारे में कुछ रोशन देंगे. थैंक यू वेरी मच. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे पहले let me convince, I am nothing, I am nothing, I am nothing, I am nothing but the dust under the feet of the Mu'mineen. Please do not say anything about me like that, because that will not help me. It does not help anyone. I am Garib and Nachis and nobody. Your question, that whoever has the remembrance of Allah, the shaitan will not be able to stay there. Because Imam's Nur, his remembrance, is the way to keep the shaitan away. That is true, and that is the Farman. That is so true. And what was your second question, Jalal Bhai? મોમન જે મોમન હોય છે એને કદમે કદમે મોજીજા હોય છે. G. Okay. This question may be a little bit harder to explain. So what are the miracles? You know, I remember someone talking on this very line one day that she sees the miracle. Again, be humble. Be humble is the key. And we think the things that we get done in this world are the miracles. Every breath is the miracle of Allah. Every minute is the miracle of Allah. But the true miracles are of the spiritual world and the intellectual world. हकीकी माजिज़ा ये नहीं है कि जो हम दुनिया के अंदर देखते हैं. असल माजिज़ा जो है वो बातीन का माजिज़ा है, दीदार का माजिज़ा है, नूर का माजिज़ा है, इल्म का माजिज़ा है, समझ का माजिज़ा है, बुलंदी का माजिज़ा है. So again, my humble request would be, humility is a part of the moment's life. So when we talk about anything of this sort, remember, be humble. We are nothing. We are nothing. We are nothing. That is the key. When you become nothing, you know what will happen to you? Then Imam will come and pick you up and will rise you to the highest level possible. That is the humility. Very good. Thank you for drawing our attention to this Farman. Ji.
Any other comments or question? Okay, if not, we can stop here. Thank you everybody for joining us. Inshallah, we'll see you again tomorrow morning. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad. Ya Ali Madad, sir. माशाल्लाह Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. माशाल्लाह या अली मदद सर या अली Thank you, Ya Ali Madad, Ya Ali Madad, Ya Ali Madad. Ya Ali Madad, sir. Shukr, Ya Ali alhamdulillah. Madad, Ya Ali Madad, Ya Ali Madad. Thank you. Thank you, Ya Ali Madad, Ya Ali Madad. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad. ओके या अली मदद Ya Ali Madad, Ya Ali Madad, Ya Ali Madad. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad. Yeah, mute.